Hello children, how are you all? Today we will learn opposite words. Opposite words क्या होता है? Opposite word is a word that expresses a meaning opposed to the meaning of another word. समझ में आया? Opposite word वो होता है जो किसी वर्ड का opposite meaning यानी उल्टा मीनिंग का होता है. चलो हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और कर्सिव में कैसे लिखना है वो भी साथ साथ सीखते हैं. Today we will learn how to write opposite words in cursive and also understand opposite words with examples. So let us start. B-I-G big. B-I-G big मतलब बड़ा. अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? S-M-A-L-L स्मॉल. बिग का ऑपोजिट है स्मॉल. S-M-A-L-L स्मॉल. S-H-O-R-T शॉर्ट. शॉर्ट यानी छोटा. इसका ऑपोजिट है T-A-L-L टॉल. T-A-L-L टॉल. शॉर्ट का ऑपोजिट है टॉल. F-A-T फैट. फैट यानी जाड़ा मोटा. उसका ऑपोजिट है T-H-I-N थीन. थीन मतलब पतला. फैट का ऑपोजिट है थीन. T-H-I-N थीन. L-A-U-G-H laugh. laugh यानी हंसना. उसका ऑपोजिट C-R-Y cry. cry यानी रोना. laugh cry. laugh का ऑपोजिट है cry. W-E-T wet. wet यानी गिल्ला. wet का ऑपोजिट है D-R-Y dry. dry यानी सूखा. wet का ऑपोजिट है dry. D-R-Y dry. E-M-P-T-Y empty. empty यानी खाली. empty का मतलब है खाली. उसका ऑपोजिट होगा F-U-L-L full. empty का ऑपोजिट है full. F-U-L-L full. P-U-S-H push. पुश का मतलब होता है धक्का मारना. उसका ऑपोजिट है P-U-L-L पुल. उसका मतलब है खींचना. पुश का ऑपोजिट क्या होता है पुल. P-U-L-L पुल. G-O-O-D good.
गुड मतलब अच्छा, उसका ऑपोजिट है BAD, बैड। गुड बैड, गुड बैड, गुड का ऑपोजिट है बैड।